Good morning. I am Anil Agarwal, former Chief Manager, Punjab National Bank. So yesterday, SBI Junior Associate exam was over. And after the examination, many candidates have got into shock, more especially on account of general awareness. And a new discussion started from where we should cover general awareness so that we are able to attempt the question that is asked in such type of examination. The questions in general awareness were out of box. Very few questions were familiar and candidates were able to understand and reply. And this has led to a new spate of confusion in the mind of candidates what to do with general awareness in coming examination, what to do, from where to study in the general awareness. It is really, we can say, injustice to the candidates for asking such out of box questions for which candidates were not prepared. Traditionally, in general awareness, current affair is asked, or some question on banking, finance, and economics are asked, and usually candidates prepare accordingly. But all of a sudden, if questions are asked that is not expected, naturally nobody has prepared for that. And once nobody is prepared for that, it is a shocker. And this type of shocker definitely unsettle the candidate and ultimately make him or her nervous. Now that has happened. Despite all these shocks, some candidates could attempt few questions in general awareness section. Now, what is to be done in future? That question haunts the mind of candidate. Should we continue to follow the path that is well established for many years, or we have to change our strategy for coming examination? This reminds of the examination of 2024. In 2024 also, in one of the examinations, the questions of general awareness were out of box and discussion was going on what to do. But in all subsequent examination, the questions came from current affair and the known sources only. So it is very difficult to predict the source of questions of general awareness. General awareness is totally undefined territory. So now what these service providers are doing for us? The role of service provider is not to predict the questions. This we have to understand and use wisely. No service provider is capable of predicting the questions. What they are doing is they are making our journey easy. Now, one way of preparing current affair can be we read newspaper ourselves, read other material ourselves, segregate the important material out of that, and then study. This is one. But this is highly time consuming. In the world of competition, I need some source where some people are engaged in segregation, reading such news, and after synthesis or after, you can say, filtration, they place some news in a form of PDF for our reading. That is the service that these service providers are providing to you. And that's why we have to figure out few service providers, those are providing these quality services. And accordingly, I always suggest two sources, those are time tested
and in number of exams, the questions came from their segregation of news, and that gives the past history. But whether any source can predict the unpredictable, answer is no. If the examiner sets the question from unpredictable territories, naturally you will not find any source from where these questions came. Because as a candidate, you can only follow the normal wisdom. You cannot foresee the uncharted territories on uncharted questions. So here the action is required at the examiner level. Action is required at the organization that is conducting the examination, that don't put the questions that put the candidate to such a situation. Don't do injustice with the candidates. As far as candidates are concerned, they have to follow the traditional methods, they have to learn from traditional sources, they have to use the trusted sources. There is no other option. Because if they change the track, what is the guarantee that the new track will bring the questions? Because nobody can predict the questions. The only thing is the service provider can do ease of reading. That means he can make the various news items or various information in a systematic manner and arrange in a systematic PDF from where you can easily read. That is the only thing the service provider can do. But no service provider can predict the questions. And that's why my advice is, although this exam has gone, for future exam, you should continue to rely on traditional sources and work accordingly. Because any confusion over source of general awareness for future exams can be more harmful than trusting the traditional sources. Because if we go on shifting our source, it will only harm you, because this is unpredictable territory. So what is the guarantee if I start reading the data, the questions will come from data? Nobody can say like that. Last year also it happened. In one of the examination, questions were totally, you can say, out of box. But in all other examinations, the questions were from the traditional sources or the normal system. So we hope wisdom will prevail with the examiner. They will put the question that is the traditionally asked, or from where the candidates are preparing. Don't do injustice with the candidates. Candidates can only put in efforts. They have lot of aspiration. They have lot of expectations. So the examiner has to be responsible. And I don't think moving here and there and getting a lot of confusion in mind will help the candidates. This channel is right advice at right time, because this question was bothering many candidates, and that's why I have expressed my opinion and my view. And this view and opinion is based on experience of many years with you and your feedback about examination. I am directly in touch with thousands of candidates since 2012, and what is happening in past, we can only sense that and act accordingly. This is my advice. God bless you all. अब यही बातें हम हिंदी में करेंगे. कल SBI जूनियर एसोसिएट का एग्ज़ाम आया
और उसमें जनरल अवेयरनेस ने छक्के छुड़ा दिए। जनरल अवेयरनेस का पेपर देख के सभी कैंडिडेट्स हैरान रह गए और कुछ ही कैंडिडेट कुछ क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाए और काफ़ी कैंडिडेट्स बहुत ही कम क्वेश्चंस को आंसर कर पाए। एक शिफ्ट में तो फिर भी ऐसा सुनने में आया है कि कुछ लोग आंसर दे पाए हैं कुछ क्वेश्चंस के, दूसरी शिफ्ट में उससे भी ज़्यादा हालत ख़राब रही। और ये प्योर इनजस्टिस है कैंडिडेट्स के साथ। कैंडिडेट्स को उस तरह के क्वेश्चन पूछना जिसका कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकता, प्योर इनजस्टिस है और एग्जामिनर को चाहिए कि वो ऐसा ना करे। कैंडिडेट कैसे इन चीज़ों का अनुमान लगा सकता है कि कहाँ से क्वेश्चन आएगा? वो तो वही कर सकता है ना जो वर्षों वर्षों से होता आया है। जनरल अवेयरनेस एक ऐसा फील्ड बन गया है जिसकी कोई परिभाषा नहीं है, जिसका कोई सिलेबस नहीं है, कोई भी कहीं से भी प्रश्न पूछने लगा है। पर कैंडिडेट तो उन्हीं क्षेत्रों की तैयारी करेगा जो संभवतः पूछे जाते हैं। वो करंट अफेयर की तैयारी करेगा और वो करंट अफेयर सोर्सेस से तैयारी करेगा और करंट अफेयर को अच्छी तरह मेहनत करके एग्जामिनेशन हॉल में जाएगा। उसकी क्या गलती है? उसकी कोई गलती नहीं है। उसको जो गाइड किया जा रहा है उसके अकॉर्डिंगली वो कर रहा है। गाइड करने वाले की भी कोई गलती नहीं है, क्योंकि गाइडेंस भी वही दी जाएगी जो हिस्टोरिकली हो रहा है। क्योंकि आप कोई भी सर्विस प्रोवाइडर जो करंट अफेयर की सर्विसेज आपको दे रहा है, कौन सा क्वेश्चन आएगा इसको वो एंटिसिपेट नहीं कर सकता। उसके पास कोई तरीका नहीं है जानने का कि एग्जामिनर के दिमाग में क्या चल रहा है, वो क्या कर रहा है आपके लिए। वो मात्र ये कर रहा है कि अगर आपको करंट अफेयर की तैयारी करनी है तो एक साधन तो ये है कि आप खुद अखबार पढ़ें, खुद आप उन सोर्सेज को पढ़ें, खुद आप उन सब चीज़ों को पढ़ें जहां पर ये इंफॉर्मेशन है। मगर वो आपके बिहाफ पर इस इंफॉर्मेशन को पढ़कर, उसको फिल्टर कर कर और उसको आसान भाषा में कन्वर्ट कर कर आपके लिए पीडीएफ की भाषा में प्रेजेंट करता है ताकि आप उसको तैयारी कर सकें। मगर कौन सा क्वेश्चन आएगा कौन सा नहीं आएगा वो इसको प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। उसके पास कोई साधन नहीं है ये जानने का कि एग्जामिनर कहाँ से क्वेश्चन सेट करने जा रहा है। तो वो कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो आपके लिए प्रिडिक्शंस कर सकता है। हाँ, वो व्यक्ति है जो आपकी राह आसान कर सकता है। जो काम अगर आप खुद करेंगे तो बहुत मेहनत लगेगी और उतना वक्त आपके पास है ही नहीं। आपका वक्त बचे, कम वक्त में आप अधिक जानकारी हासिल कर सके, इसलिए करंट अफेयर के सर्विस प्रोवाइडर आपके लिए मेहनत करके, छांट काट करके वो खबरें आपके लिए वीडियो फॉर्म में प्रेजेंट करते हैं जहां से आप एग्जामिनेशन में उत्तर दे सकें। और ये किस पर आधारित होता है? जो पिछले कई वर्षों से जिस तरह का ट्रेंड चला आ रहा है, किस तरह की खबरें सामान्यतः पूछी जाती हैं, किस तरह के विषय सामान्यतः पूछे जाते हैं, उस तरह के विषयों को ध्यान रखते हुए इस तरह की सूचनाएं आपके लिए एकत्र करके दी जाती हैं। पर यदि कोई एग्जामिनर ये ठान ही ले कि मुझे इस तरह के क्वेश्चन पूछने हैं जो किसी को नहीं आते, उसमें कोई भी सर्विस प्रोवाइडर कुछ नहीं कर सकता। तो जब इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं तो मन में एक शंका आने लगती है कि क्या जो मैं कर रहा हूं ऐसा ही करता रहूं या मुझे कुछ और करना है। इसका आंसर ढूंढने के लिए हमें जाना पड़ेगा पिछले साल के एग्जाम में। पिछले साल भी ऐसा हुआ कि एक एग्जाम में आउट ऑफ बॉक्स क्वेश्चन आ गए जनरल अवेयरनेस के, और चारों तरफ ये फैल गया कि अब हम क्या करें, आने वाले एग्जाम में क्या होगा, हमें क्या करना चाहिए, हमें यही करना चाहिए या हमें कोई नया रास्ता अपनाना चाहिए। और बाद के एग्जाम्स में ये देखा गया कि उसमें उसी तरह के क्वेश्चन आए जो सामान्यतः आते हैं। तो वो वन ऑफ इवेंट होकर रह गया और जो लोग सामान्य रूप से तैयारी करते रहे वो उसके अंदर कामयाबी पा गए। और उस वाले एग्जाम में भी
जिन्होंने औरों से अच्छा परफॉर्म किया था वो कामयाब हो गए। इस साल भी हालांकि एसबीआई जूनियर एसोसिएट में बहुत विचित्र तरह के क्वेश्चन आ गए हैं, काफी चिंता लोगों के मन में आ गई है और तरह तरह के विचार मन में आ रहे हैं। इसीलिए मैं ये आज वीडियो आपके लिए बना रहा हूं कि अब हम क्या करें। अगर हम बहुत दिमाग लगाते हैं, बहुत समझदारी करते हैं, तो कुछ और हमें सूझता नहीं है कि जो हम तरीका अपना रहे हैं हमें वही तरीका अपनाते रहना चाहिए। अब उसमें से आने वाले एग्जाम्स में क्वेश्चन आते हैं या नहीं आते हैं, इसको कोई सर्टेनिटी से नहीं कह सकता, मगर आने चाहिए ऐसी एक आशा की जा सकती है, क्योंकि विजडम प्रिवेल करनी चाहिए एग्जामिनर के ऊपर। अगर एग्जामिनर उस तरह के प्रश्न पूछने लग जाएगा जो कोई सोच भी नहीं सकता, तो कैंडिडेट कैसे तैयार करेगा उसको? क्या कैंडिडेट के पास कोई तरीका है ये जानने का कि वो कहां से पूछेगा? वो तो वही तरीका कैंडिडेट यूज करेगा जो पिछले कई वर्षों से जिस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो तो उसी तरह की तैयारी कर सकता है। तो मेरी तो जो समझ में आ रहा है, जो मेरी विजडम कहती है, वो तो ये है कि हमें जो ये ट्रेडिशनल मेथड की हम तैयारी करते आ रहे हैं, इसको नहीं छोड़ना चाहिए। हमें ऐसे ही तैयारी करनी चाहिए और हमें आशा करनी चाहिए कि जो इस एग्जामिनेशन में एग्जामिनर ने किया है, आने वाले एग्ज़ाम्स के अंदर इस तरह की बात रिपीट ना हो। और जब ये फीडबैक तो जाती है, जो भी होता है, ऐसा नहीं है फीडबैक नहीं जाती है, उनको जब वो पेपर की इवैल्यूएशन करेंगे वहाँ भी समझ आएगा कि कुछ ना कुछ तो पेपर में प्रॉब्लम रही है, जो मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट की परफॉर्मेंस नीचे आ रही है। तो मेरा मानना तो यही है, क्योंकि अगर हम मान लो अपने रास्ते से भटक जाते हैं और एक इस शौक के कारण हमें लगता है कि नहीं नहीं हमें कुछ और करना चाहिए, और फिर हम कुछ और करने लगते हैं, उसमें से भी कुछ नहीं आएगा और सब कुछ इसी में से आ गया, तो फिर हमें पछतावा होगा। तो इसलिए जो चीज़ ट्रेडिशनल है हम तो वही समझ सकते हैं, वही कर सकते हैं। क्या नया हो जाएगा वो तो या तो कोई डिक्लेयर करें कि हम ये नया करने जा रहे हैं, आने वाले एग्ज़ाम में हम यहाँ से पूछेंगे, तब तो कैंडिडेट को उस तरह की गाइडेंस दी जा सकती है। पर यदि कुछ भी नहीं बताया जा रहा और पेपर का पैटर्न बताया जा रहा है कि सिमिलर है जो पास्ट में है, तो हमें पास्ट तरीके ही अपनाने पड़ेंगे। जो मुझे समझ आया वो मैंने इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस किया है। आपके मन में अनेकों विचार चल रहे होंगे। जब इस तरह का शौक लगता है तो नेचुरल है, मन अशांत होता है, मन में समझ नहीं आता है, रास्ता दिखता नहीं है। पर ये चैनल हमेशा राइट एडवाइस एट राइट टाइम है। जब भी इस तरह के इवेंट्स होते हैं हम कोशिश करते हैं आपके मन को शांत करने की, आपके साथ खड़ा रहने की, ताकि आने वाले एग्ज़ाम्स के अंदर आपका नुकसान ना हो। और इस एग्ज़ाम में भी जिन लोगों ने औरों से बेहतर किया है, नेचुरली उनका सिलेक्शन अभी भी होगा, डिस्पाइट कि आउट ऑफ बॉक्स क्वेश्चन आए हैं। कल मैंने अपने विचार एक रिव्यू वीडियो में दिए, उसको आप ध्यान से रखें। इसके अंदर यदि हम अपने दृढ़ रास्ते पे बने रहेंगे तो मेरा मानना है कि आप अच्छे रहेंगे। बाकी अगर किसी को लगता है कि कोई और ऑप्शन अच्छे हो सकते हैं और कोई विकल्प अच्छे हो सकते हैं, तो वो अपने विवेकानुसार उसको इस्तेमाल कर सकता है। पर जो मेरा एक्सपीरियंस है कैंडिडेट्स के साथ, जो मेरा एक्सपीरियंस है पिछले कई वर्षों के एग्ज़ाम्स के कारण, उसमें मैंने देखा है कि यदा कदा तो कभी कभी कोई एग्ज़ाम आउट ऑफ बॉक्स हो जाता है, मगर फिर सारे आने वाले एग्ज़ाम फिर नॉर्मल तरीके पर ही आ जाते हैं। इस साल भी हम यही उम्मीद करते हैं कि आने वाले एग्ज़ाम नॉर्मल पैटर्न पे ही होंगे और ज़्यादा शॉक कैंडिडेट्स को नहीं मिलेंगे। गॉड ब्लेस यू ऑल।